हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 11 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उनके आंसर्स कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पैकेटीन। क्वेश्चन 2 का आंसर है सेंट्रोसोम। थर्ड का आंसर है रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल्स। फोर्थ का आंसर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स बाय डीएनए रेप्लिकेशन। ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज हर एक डॉटर सेल ईच डॉटर सेल शुड रिसीव क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। Daughter cell are exactly the same copies of their parent cell, which ensures they will function correctly. Next, answer 5, metaphase of mitosis and metaphase of meiosis 1. Metaphase of mitosis, each chromosome consists of two chromatids which are held together by centromere. Metaphase of meiosis 1, homologous chromosomes form bivalent. Each bivalent consists of 4 chromatids and 2 centromeres. Metaphase of mitosis, the chromosomes line up in the one plane to make up the equatorial plate. Metaphase of meiosis 1, bivalents become arranged in the plane of the equator, forming an equatorial plate. Answer 6, 24 hours. Different organisms have different cell cycle duration. Even within an organism, different cell types can have different cell cycle duration. Therefore, the cycle duration is not the same for all the cells. वो सबके लिए अलग होती है. Answer 7, significance of meiosis. It reduces the number of chromosomes to half in daughter cells. It is an essential phenomenon in the life cycle of sexually reproducing animals as it restores the fixed number of chromosomes. Gametes are fixed as the result of meiosis. Each gamete possesses half the number of chromosomes present in somatic cells. It avoids the multiplication of chromosomes and thus maintains the stability and a constant number of chromosomes of the species. क्रॉसिंग ओवर के पीरियड के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल होता है. जेनेटिक वेरिएशंस विद इन द स्पेसिफिक टेक्स प्लेस with the result that new combination of genetic materials are formed. Answer 8, animal cell mitosis and plant cell mitosis का differentiation occurs in bone marrow and many epithelial tissues, whereas plant cell mitosis occurs only in meristems. Animal cell mitosis, cell becomes spherical before cell division, and in plant cell mitosis, cell shape does not change before division. Animal cell mitosis, several hormones induce cell division, whereas in plant cell mitosis, induced by plant hormone cytokinin. सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल में, प्लांट में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है. Mitotic apparatus contains asters, whereas in plant, mitotic apparatus has no asters. Mid-body is formed, whereas in plant, mid-body is not formed. In animals, occurs through cleavage, and in plants occur by cell plate formation. 8-point microfilaments are involved in it, whereas in plants, microfilaments are not formed. Cleavage proceeds centripetally in it, and in plant cell grows centrifugally in it. इसमें डिफरेंस है कि वो सेंट्रीपेटली होता है और वो सेंट्रीफ्यूगली. आंसर 9, stages of meiosis 2. Prophase 2. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before chromosomes have fully elongated. The nuclear membrane disappears by the end of the prophase 2. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज 2 के एंड में और क्रोमोसोम दोबारा कॉम्पैक्ट हो जाता है. द क्रोमोसोम अगेन बिकम्स कॉम्पैक्ट. मेटाफेज 2 आता है उसके बाद. एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एस्टर बॉडी from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores. Kinetochores disc-like structures होते हैं of sister chromatids. Anaphase 2, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, allowing them to move towards opposite poles of the cell. Telophase 2, meiosis ends with telophase 2, in which two groups of chromosomes
once again gets enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of the tetrad of cell, that is 4 haploid daughter cells. टेलोफेज 2 in short आप कह सकते हो कि प्रोफेज 2 की बिगनिंग दोबारा से होती है. सो टेलोफेज 2 में 4 haploid daughter cells फॉर्म होती हैं, that is tetrad of cell. Answer 10 is Pachytene. Answer 11. Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. कुछ सेल्स एडल्ट एनिमल्स में वो अपीयर नहीं करती हैं कि वो सेल डिवीजन करती हूँ, जैसे कि हार्ट सेल्स, वो उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, वो इंक्लूड होती हैं G0 फेज़ में. एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, बहुत कम वो डिवाइड होती हैं. एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ या फिर इंजरी की वजह से लॉस्ट हो जाना सेल का. दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर exit G1 phase to enter an inactive state, that is known as your G0 phase or quiescent stage of the cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism. In short, इसका आंसर ये है, G0 फेज़ एक क्वाइसेटेंट फेज़ होता है जहाँ पे सेल डिवीजन फर्दर कंटिन्यू नहीं होता, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गई उनमें. आंसर 12 दैट इज़ माइटोसिस. आंसर 13 इज़ इन मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ, hence it is called reductional division. While in mitosis the number of chromosomes remains constant after division, इसलिए वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है. मियोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए वो रिडक्शनल होता है. और वहीं माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इसलिए वो इक्वेशनल डिवीजन होता है. 3 प्रोसेसेस इन इंटरफेस, दैट इज़ G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. S1 फेज को हम लोग गैप 1 फेज भी कहते हैं. इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate the DNA. G1 phase के टाइम पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यू करती है ग्रोथ, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करती है इट्स DNA. S phase, that is also known as your synthesis phase. This phase marks the period during while DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस. यहाँ पे DNA सिंथेसिस होता है या फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स. इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द DNA इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेज टू 4C. इसमें डबल होता है ना, तो इसलिए अगर वो 2C है तो वो 4C हो जाता है. However, there is no increase in the chromosome number if the cell had the diploid or 2n number of chromosomes at G1. Even after S phase, the number of chromosomes remains the same, that is 2n. In the animal cells during the S phase, synthesis phase के टाइम पे animal cell में DNA replication begin in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि S phase में DNA replication begin होता है न्यूक्लियस में और centriole duplicate करता है साइटोप्लाज्म में. नेक्स्ट है G2 phase. G2 phase और the gap 2 phase. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. G2 phase में प्रोटीन synthesized होती हैं preparation of mitosis के लिए और cell growth continue करती है. Answer 15. Mitosis results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement usually. Growth of multicellular organisms is due to mitosis. Cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes essential for the cell to divide metabolically to restore the न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए इसको एसेंशियली सेल को डिवाइड करना होता है मेटाबॉलिकली. अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इन सेल रिपेयर. सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये होता है माइटोसिस का, दैट इज़ योर सेल रिपेयर. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, cells of the lining of the gut and blood cells are being constantly replaced.
कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती हैं गट और ब्लड सेल्स. Mitotic divisions in the meristematic tissues, the apical and the lateral cambium, result in a continuous growth of plants throughout their life. Differentiation of mitosis and meiosis. Mitosis occur in all the somatic cells, whereas meiosis occurs in reproductive or germ cells. Mitosis occurs in both sexually as well as asexually reproducing organisms. Meiosis occurs only in sexually reproducing organisms. Mitosis cell divides only once. Meiosis में whole process completes into two successive division, that is your meiosis 1 and meiosis 2. Mitosis synapsis is absent, whereas in meiosis synapsis is present. No crossing over and chiasmata formation, whereas in meiosis crossing over and chiasmata formation occurs. Mitosis, a cell produces two diploid cells, and whereas in meiosis a cell produces four haploid cells, that is our tetrad cells. Homologous chromosomes are pairs of similar chromosomes having corresponding genes governing the same set of traits. During the heterotypic division of meiosis in leptotin, chromosomes are thread-shaped and coiled. हेट्रोट्रोपिक डिवीजन में meiosis में लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड शेप्ड में होते हैं और कॉइल्ड होते हैं, यार्न टाइप होते हैं. ड्यूरिंग जाइगोटीन द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग. जाइगोटीन के वक्त होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग शुरू हो जाती है. पैकीटीन में क्रोमोसोम्स शो थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग. डिप्लोटीन is marked by the cessation of attraction force between two homologous chromosomes. Uncoiling of homologous chromosomes tends to separate them from each other but remain attached to chiasmata. Dikinesis के वक्त separation of homologous chromosome complete हो जाता है. Exchange of parts between chromatids of homologous chromosomes may take place. During anaphase 1, the centromere of the homologous compounds of bivalents repel each other. Separation के बाद centromere, the homologous chromosome, begin to move apart. Telophase 1 में chromosomes reach poles and become shortened. Answer 18. Mitosis is an equational cell division in which the number of chromosomes in parent and progeny cells remains same. Stages of mitosis. Prophase. Chromosome material condenses to form compact mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. Initiation of an assembly of the mitotic spindle. The microtubules, the protein components of the cell cytoplasm, help in the process. Metaphase. Spindle fibers attached to the kinetochores, that are the disc-like structures of chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. Anaphase. Centromere splits and chromatids separate. Centromeres move to opposite poles, that is your north and south poles. Telophase. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements. Nuclear envelope assembles around the chromosome clusters. Nucleolus, Golgi bodies and the ER reform. Differentiate between cytokinesis in plant cell as well as in animal cell. In plant cell, it is the cytoplasmic division of a plant cell bringing about the separation into two daughter cells, whereas in animal cell, it is the cytoplasmic division of an animal cell bringing about the separation into two daughter cells. Cytokinesis occurs via formation of a cell plate at the middle of the cell, and cytokinesis in animal cell occurs via the formation of a cleavage furrow. In plant cell walls are formed. In animal cell wall formation does not occur. Constriction of the cell membrane does not occur in plant cell, and cell wall constricts in animal cell. The Golgi apparatus releases vesicles that contain cell wall materials which fuse at the equatorial plate to form cell plate. No muscle, myosin II and actin filaments assemble equatorially in the middle of the cell at the cell cortex to form a
contractile ring. Cell plate formation starts at the center of the cell and grows outward towards the lateral walls in plant cell, and in animal cell, cleavage starts at the periphery and moves inward, dividing the cell into two parts. Answer 20 is your S phase or your the synthesis phase. सो गाइस यहीं पे मेरे 20 क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें. थैंक यू.